who have joined us today. Today we are going to tell you about the importance of English language and why do you need to learn this language. First of all, as you might have been aware of this already, that you are here to learn English language. And first of all, knowing that why English is important, why not Urdu, why not any other language is very important. So I will just give you a little bit background of English language that why is it important. I hope you can all look at the screen because I've shared my screen. It's a language of communication. Yes. Language of international correspondence means it is known as an international language. You may have heard of different languages, but official language of 53 countries is English. Can you believe that? I know you may just have thought about English as a language which is spoken in America or England or Australia and New Zealand, because these are the four countries that everybody knows about, which are known for speaking English language. But you see, 53 countries is a big number. If you see how many countries are there in the world, okay? And first language of 400 million people worldwide. Yeah, you see 400 million people. इसको कितना कहते हैं? एक जो million होता है वो 10 लाख लोग होते हैं. So you can imagine how vast the use of English language is, and the main reason is because you need to communicate to others. When you are living in a world full of people, you will see people, you will meet people in your life, and you will need to communicate with them. तो कम्युनिकेशन के लिए इतने लोग जब दुनिया में मौजूद हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले हैं, if you don't know English, you cannot communicate with them. And it is most common second language in the world. Like look at our own country, Pakistan. Pakistan में ये second language है. आपकी first language, it could be Urdu, Punjabi, Seraiki, Pashto. It could be any native language that is being spoken in your house or in your city or province. But second language is English. All of you would agree with me on it because when you go to school, you start learning English, you start learning alphabets, and eventually you must know English if you reach to higher studies. Like in every master's, apart from some specific ones, like if you're doing masters in Urdu or Islamiyat, you have to learn in English. And then obviously international socializing. As I said, 400 million people worldwide have first language English, and then it's the most common second language in the world. So even if you don't talk to a native person, if you speak to a Chinese, how would you communicate? That person would know Chinese and you know Urdu. So there must not be the language barrier. उस language barrier को खत्म करने के लिए, उस रुकावट को खत्म करने के लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं, एक ऐसी लैंग्वेज जिसने बहुत से मुल्कों को मिला दिया है, बहुत से लोगों को मिला दिया है, एक दरमियान का रास्ता निकाल दिया है ताकि आप बहुत कुछ सीख सकें. Okay, let's go further and see what else is there that we can, why do we need to learn English language. Education and career growth. If you want to study higher, let's say you want to study in college, you want to study in university, everybody has an English subject. So you must know how to read. अभी जैसे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, if you're preparing for army test, for navy test, no matter what the test is, you must know English language. So again, as I always stress upon learning language, we don't talk about culture, we don't talk about knowing their norms and everything. We talk about language. Particularly, the focus should be on language, zuban, जैसे बोली जाती है, जो words use करते हैं उस पे. Then comes job interview or test. As we already spoke about it, ISSB interview, some tests, they would require your proficiency in English language. Proficiency कहते हैं कि आपको कितना उस language पे अबूर हासिल है. Then better employment opportunities. If you go to an interview and if you don't talk in English, I won't say that whether it's a good approach or not. But आप इसको deny नहीं कर सकते कि if you know English, then you will be succeeded in the interview, then you will get the job. If you don't know English, you may have knowledge of that area, still you might not be successful.
So for better employment opportunities, you must know English language. Similarly, aids in learning in other language. As I already said, if you want to learn, let's say French, okay, there is an app. There are different apps that you can use to learn language. Now, what you have to do, those apps only give you knowledge in English. So basically, even if you want to learn French, you must know English. आप ऐसे नहीं कर सकते कि किसी जगह पे जाके आप उर्दू से फ्रेंच सीख लें. You can do at some places, but again, if you want to do it on your own, you must know English language to learn various other languages. उसके लिए भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए. अगर आपने कम्युनिकेट करना है किसी से, किसी यूरोपियन कंट्री में आप चले जाते हैं जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, इट्स अ सेकंड लैंग्वेज, एंड यू वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज, देन इंग्लिश विल कम टू हेल्प यू. आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती हो, आपको पता है कि आप कम्युनिकेट कर लेंगे, आप अपनी बात कन्वे कर लेंगे, और कोई ना कोई पर्सन वहां पे होगा जिसको वो समझ आ जाएगी. Similarly, it says widens the horizon. You see, when you are living, when you have one language, you are living in one world. Okay, when you know different languages, आपके लिए पूरी एक दुनिया का एक डोर ओपन हो जाता है. If you know French, you can communicate to French people. If you know English, you can communicate to so many people. अब फ्रेंच भी देखें तो वो भी लिमिटेड लोग बोलते हैं, कुछ कंट्रीज में बोली जाती हैं. चाइनीज देखें तो कुछ कंट्रीज में बोली जाती हैं. कोई भी लैंग्वेज है वो कुछ कंट्रीज में बोली जाती है. व्हाट इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज. इसलिए नो मैटर वेयर विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू गो, इंग्लिश आपको सेव करेगी, आपको बचाएगी, आपका फ्यूचर बनाएगी. इवन इफ यू इग्नोर इट, इवन इफ यू डिनाई इट कि नहीं इंग्लिश के बगैर भी काम हो सकता है, ओके, बट एक टाइम आएगा व्हेन यू विल रियलाइज दैट यू आर वे बिहाइंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. बाकी दुनिया आपसे बहुत आगे जा रही है. उसकी एक रीजन यही होगी, जो मेन होगी, कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीखी. लैंग्वेज के ऊपर अबूर हासिल करना चाहिए. यू नो, इवन इट इज बीइंग सेड दैट नॉलेज इज द की टू सक्सेस. तो नॉलेज किसी भी चीज की हो, उसी में लैंग्वेजेस आती हैं. ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है. नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट स्पीकिंग स्किल्स. ओके, it says when it comes to speaking skill, there are various things. First, we talk about fluency. Fluency is in which comfort level you're talking, and rather you can talk in a continuity, like एक लगातार बात कर सकते हैं आप या नहीं, या थोड़ा सा रुक रुक के ठहर ठहर के बात करते हैं. That means कि fluency आपकी इतनी अच्छी नहीं है. So fluency के लिए of course you need to practice. Then comes vocabulary. Vocabulary are always the words that you speak in any language. For example, I use the word for example. So अगर मैंने उर्दू में बोला है तो मैं ये कहूँगी कि मिसाल के तौर पे, वो उर्दू के अल्फाज हैं. वर्ड्स, vocabulary, इंग्लिश में जो यूज होते हैं अल्फाज, आप कह सकते हैं वेल डन, आप ये कह सकते हैं गुड, आप कह सकते हैं एक्सीलेंट, मार्वेलस, इनक्रेडिबल. दीज आर द डिफरेंट वर्ड्स. सो vocabulary के भी लेवल्स होते हैं. इनिशियल vocabulary होती है बेसिक vocabulary that everybody can speak, आपके लिए आसान होती है. एंड देन कम्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, कम्प्लेक्स होती जाती है. आप जितनी अच्छी इंग्लिश सीखते हैं, जितनी अच्छी vocabulary यूज करते हैं, that shows how much proficient you are. आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वो जाहिर करती है आप कितना अच्छा लैंग्वेज पे अबूर आपको हासिल है. देन कम्स ग्रामर. ग्रामर बेसिकली स्ट्रक्चर होता है. जैसे अगर मैं ये कह सकती हूँ पानी मुझे चाहिए इधर, तो आपको शायद बात समझ आ जाए, बट द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इज नॉट राइट. So that arrangement, that structure of language is known as grammar in English. उर्दू में भी आपको आई थिंक ग्रामर ही बोला जाता है. इंग्लिश में भी ग्रामर होता है. ग्रामर सीखते हैं आप, आपको पता चलता है कौन सा लफ्ज जो है वो कहाँ पे डालेंगे, तो कैसे एक सेंटेंस बनेगा. ग्रामर टेल्स यू हाउ टू मेक सेंटेंसेस, how to make a paragraph, how to make an essay. And believe me, I'm not talking about writing here. We're talking about speaking, because speaking also involves grammar, also involves structure of the language. Then comes the most important thing when it comes to speaking. Yes,
Pronunciation. If the pronunciation is not right, the other person will not be able to understand what you are saying. आप अपनी तरफ से तो ठीक बोल रहे होंगे, but the other person cannot understand what you are saying. For example, the word is pat, P-A-T, pat. And then the word is P-E-T, that is pet. Pat and pet. Okay? So आप P-E-T को pat बोल सकते हो और P-A-T को pet बोल सकते हो, which is actually the wrong pronunciation. Okay? एक्सेंट की बात नहीं हो रही, एक्सेंट सबका डिफरेंट होता है. यू कैन टॉक इन पंजाबी एक्सेंट, यू कैन टॉक इन उर्दू एक्सेंट, क्योंकि जो आपकी अपनी फर्स्ट लैंग्वेज होती है ना, वो कहीं ना कहीं उसका एक शैडो आता है आपकी स्पीकिंग में. Some people overcome it. Some people, they try, they practice a lot, and then they get the native accent, or they improve their accent. But sometimes there are people who cannot change it. It's not in a person's hand at some time. Like let's talk about our neighbor country, India. If you listen to them in speaking English, it's a little weird. There are some words that they cannot pronounce. It's not their fault, I would say. Obviously, like French, they cannot pronounce some words too. The word when it comes sh, the sound sh, they cannot pronounce it. So basically वहां पे वो accent आ जाती है. लेकिन pronunciation means जब आप एक word बोल रहे हो तो आप उसको सही बोलो. If you say I have a pet, okay, I would understand that you're talking about a pet. Maybe it's a dog, maybe it's a cat. Okay, जब आप पैट बोलेंगे तो फिर वो डिफरेंट होगा. अगर आप एक वर्ड से इस तरीके से नहीं बोलेंगे तो द अदर पर्सन विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड यू, क्योंकि communication is always a two-way process. A person is speaking and the other person is listening. Okay, now let's come a little bit about the purpose of this class. ठीक है, बेसिक पर्पस क्या है इस क्लास का, यहाँ पे आपको क्या चीजें सिखाई जाएंगी जो कि आप वैसे नहीं सीख सकते, या आपको जो हेल्प आउट करेंगी आपके फ्यूचर में, आपके टेस्ट में, आपके प्रिपरेशन में, नो मैटर व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट. गाइस, maybe we should not keep this class specific for ISSB test or just like army or navy test. Keep in mind, if you come to this class, if you join this class, your future will be bright. That I can be assured of. आपको बिल्कुल गारंटी इसकी है, but on this condition only that you take active participation. आप इससे कुछ लर्न करें, आप अपने क्वेश्चंस पूछें, जो आपको प्रॉब्लम्स है उनको उनके बारे में पूछें. ये आप सब करते हैं तो उसके बाद ही आप लर्न करते हैं. If you would keep on listening to me, you will not learn. Guys, please stop playing with the screen. Okay, so first we have cue cards. Now, what is a cue card? Cue card is basically a topic is given to you. Okay, like let's say my family, and then there would be some questions related to that topic, which means आपकी फैमिली के जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो आपसे पूछे जाएंगे, and then you will be given some time to prepare it and then talk on that topic. It is just to to overcome your fear of speaking. Now, the most important thing that I would like to mention here is, बहुत से लोग ऐसे हैं आप में से जो कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, जिनको बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है, जो ग्रामर में अच्छे हैं, जो इंग्लिश में स्पेलिंग्स में अच्छे हैं, who know how to write English. But when it comes to speaking, then it becomes difficult for them. Why? Because sometimes you have it in back of your head that, oh no, maybe I cannot talk. जो ये about it that we are not native speakers. This is not your first language. और आप ऐसे नहीं होता कि आप when you are born and all of a sudden you start speaking another language. Okay? It doesn't happen like that. आपको लैंग्वेज जब आप बोल रहे हैं, आपको क्यू कार्ड, वैसे आई ऑलरेडी सेड दैट क्यू कार्ड ऐसा होता है कि आपको एक टॉपिक आता है, टॉपिक दिया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं जिस पे आपको बात करनी होती है, ठीक है. तो क्यू कार्ड बेसिकली वो होते हैं. तो आई वाज सेइंग कि आपकी जो झिझक है, हेलो, कैन यू हियर मी नाउ?
All right. Maybe there was an internet issue. All right. So let's just get back to the topic. Somebody asked here about Q card. So Q card, I told you there is a topic which is given to you और उससे related कुछ questions होते हैं जो पूछे जाते हैं, right? अच्छा, अब बात हो रही थी कि आप क्यों बोल नहीं सकते। जो मेन हर्डल है, जो सबसे बड़ी रुकावट होती है ना, वो ये है कि आप यू आर शाय, यू नो। आई नो many of you are here. Most of the participants will be saying this thing to me in this class or in the next class or the next class, that ma'am, we cannot talk, or I'm very shy to talk. Guys, you know, if you don't do something, you will never learn it. तो प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए आपकी लाइफ में। जब आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं तो फिर आप उससे बहुत ज्यादा लर्न कर सकते हैं। अगर आप you know, if you think that you will keep on listening to me, you will keep on listening to this class and you will learn, okay, you can learn but to some extent। जो आप एक बियॉन्ड द लिमिट सीखते हैं ना, वो तभी होता है when you take active participation। if you are hesitant, mind you, this class is not going to judge you, I'm not going to judge you on any grounds at all। ऐसे होता है कि आप बोलते हैं, आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कोई भी आपकी हेजिटेशन होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती है। एवरीथिंग टेक्स टाइम। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने घर में किसी के साथ बात करें। स्पीक इन इंग्लिश, think in English। Yes, सोचें। You know, let's say I'm doing some task and I'm thinking, if you know, sometimes what happens is I'm going to narrate like a funny story here। When you fight with somebody, then आप क्या करते हैं कि उस फाइट में आप you sometimes you're unable to say something। उस टाइम आप कुछ भी नहीं कह पाते, बट लेटर ऑन आप सोचते हैं कि मैं ये भी कह सकता था, मैं ये भी कह सकता था, मुझे ये भी कहना चाहिए था। इट हैपेंस विद एवरीवन, आई एम श्योर। ओके, तो होता क्या है कि जब आप सोच रहे होते हैं ना, यू आर मे बी थिंकिंग इन योर ओन लैंग्वेज। व्हाई डोंट यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश? थिंक अबाउट इट। अगर किसी ने मेरे से ये पूछा तो मैं क्या कहूंगा? अच्छा, मैं ये कहूंगा आई एम फाइन, और आई एम फीलिंग गुड, और नो आई एम नॉट फीलिंग गुड। यू नो, इसको कहते हैं स्टार्ट लेना इंग्लिश में सोचने में। थिंक इन इंग्लिश एंड देन यू विल सी कि आप किस तरीके से उसको अडॉप्ट कर लेंगे। एंड माइंड यू, रीडिंग इंग्लिश एंड स्पीकिंग इज टोटली डिफरेंट, बट रीडिंग से आपको बहुत ज्यादा हेल्प होती है। व्हाई? क्योंकि आप उर्दू में भी देखें, जो पर्सन रीडिंग करते हैं, बहुत इनिशियल लेवल से जो बच्चे रीडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, उनके पास वोकैबुलरी अच्छी होती है, उनके पास एक सेट ऑफ आइडियाज होता है। मींस दे नो व्हाट टू टॉक ऑन ईच टॉपिक। उनको स्टोरीज बनाना आता है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कैन मेक स्टोरीज। आप जब फ्रेंड्स के साथ होते हैं, जब आप फैमिलीज के साथ होते हैं, यू मस्ट टेल सम स्टोरीज। बहुत कम लोग अब हैं जो कि नहीं बोल सकते होंगे, जो उर्दू में भी नहीं बात करते होंगे। मोस्ट ऑफ यू आर टॉकेटिव। आप अपनी लैंग्वेज में तो बात कर सकते हैं, सो व्हाई कांट यू टॉक इन इंग्लिश? सिर्फ इसलिए कि वो एक डिफरेंट लैंग्वेज है, सिर्फ इसलिए कि यू आर स्केयर्ड दैट पीपल विल थिंक अबाउट यू लाइक, ओ व्हाई इज दिस पर्सन टॉकिंग इन इंग्लिश? प्लीज इस चीज को ना अपने माइंड से आपने बिल्कुल अमिट कर देना है, गुम कर देना है, लाइक डिसअपेयर कर देना है। दैट इज माई टिप ऑफ द डे टू यू। इस चीज को खत्म कर दें, लाइक व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट यू, एंड व्हाई यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश। कोई माइंड करता है, कोई टॉन्ट करता है, अगर आप सही नहीं बोल रहे तो nothing matters. Believe me, your future is in your hand. And I'm telling you, even if you're living in Pakistan or you plan to go in any other country or you want to fight for your country, you must have language knowledge. Okay? Usme, I'm not saying you to stop learning languages. No, learn English, then learn other languages. You know, you don't know when you have to represent your country in other countries. आपको कभी भी चांस मिल सकता है। So why not learn the language? Why do you want to be a handicapped? Handicap उसको कहते हैं जो कि एक माजूर बंदा होता है, जिसको you know like मोहताज होता है, उसको वो कुछ कर नहीं सकता। अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है ना, इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप एक किस्म के मोहताज हैं। यू नो, like you are dependent on only one language or only two languages, maybe Punjabi or Urdu, maybe Seraiki or Urdu। So all I'm saying is अपनी वर्ल्ड को आप बढ़ाएं, इंग्लिश लैंग्वेज सीखें,
in today's world, no matter what skill you want to learn, even if you want to use computer, अपने टेक्नोलॉजी का यूज करना है, आपने लेट्स से स्टडी करना है, हाई स्टडीज, यू मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. And okay, first I told you about cue cards, then I gave you a tip about think in English. Then in this class you will have an active participation. Okay, उससे क्या है, each of you will be given a chance to talk on the topic that is the topic of the class. कोई भी टॉपिक हो सकता है. एवरी टाइम देयर इज अ डिफरेंट टॉपिक दैट वी टॉक अबाउट, डिस्कस करते हैं, जिस पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है. इट कुड बी समथिंग रिलेटेड टू यू, योर फैमिली, योर होम टाउन, यू नो, आपके बारे में ज्यादा बात होती है. Why? Because if you are talking, you will be more comfortable to talk about yourself than about others. और इट कुड बी अ जनरल टॉपिक. वेरियस टॉपिक्स हो सकते हैं जिसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स और पॉवर्टी, जो इन्फ्लेशन है, you know, and we try to strictly not go into politics, not go into religious issues, और इस तरह की कोई भी controversial topics पे हम बात नहीं करते. Why? Because I don't want anybody to hurt anyone sentiments, you know, किसी की feelings hurt नहीं करनी. Everybody has different association, किसी की religious association होती है, किसी की political association होती है. But in this class you are here as an English language student and we will stick to our motive. And then individual assessment. Yes. Okay. तो बेसिकली इंडिविजुअल असेसमेंट क्या होता है कि जब एक पर्सन बात करेगा तो फिर उस पे अगर वो अलाउ करेगा, माइंड यू, ओके, सम पीपल डोंट लाइक इंडिविजुअल असेसमेंट, सो दे विल नॉट बी असेस्ड इंडिविजुअली. उसका क्या होता है कि आपको बताया जाएगा कि आपने ये जो बात की इसमें ये सेंटेंस आप इस तरीके से बोल सकते थे, या ये आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक की, या आपको प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करने की जरूरत है, या वोकैबुलरी इंक्रीज करने की जरूरत है, या फिर ग्रामर पे यू हैव टू फोकस ऑन ग्रामर मोर. So basically, this is what you have to work on. और ये individual assessment, you will be really lucky to get this individual assessment because mind you, आप देखिए अपने घर के कंफर्ट लेवल से इतना कंफर्ट लेवल आपको और शायद कहीं भी नहीं मिले कि यू आर सिटिंग इन योर होम, यू आर सिटिंग ऑन इन द ड्राइंग रूम or maybe at work, in your office, in your college or school, and you are learning something new. आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, आपका कोई फेयर नहीं है, यू नो, इट कॉस्ट, इट सेव्स यू द कॉस्ट फॉर फ्यूल. और अगर आप देखिए, आप मैनी ऑफ यू माइट बी अटेंडिंग फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस जहाँ पे आपको कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं मिलता. सो व्हाई नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस क्लास, व्हाई नॉट गो फॉर इट. इंडिविजुअल असेसमेंट से आपको ये पता चलेगा कि आपने क्या गलती की है और कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. और believe me, must take active participation, and that is how you get individual assessment. Okay, monologue and dialogue. Monologue is when only one person is talking. Let's say I ask you, tell me something about your favorite food, and then you talk about this topic. That will be a monologue. We will all be listening to you, but you will be the only person talking. And then dialogue. In dialogue, two persons are talking. For example, I ask you a question and then you give me that answer. That is dialogue. And discussion is something that is mutually done. Now, I would explain it here that we are living in a world of human beings, but unfortunately, there are some people who do not behave well. For that purpose, we cannot unmute all of you at once, right? जैसे आपको पता है ना कि एक वो आप जंगल का भी एक लॉ होता है. So in this class, we always have law. Okay, I will come back to individual assessment. So एक लॉ ये है कि आपको one by one बोलने दिया जाएगा, and this is how it should work, you know. आप लोग सब सेंसिबल हैं, अच्छे हैं, आई एम श्योर, बट वी कैनॉट लेट यू डू दैट बिकॉज कोई एक पर्सन भी जो गलत हो, जैसे अभी somebody was trying to you know write something on the screen. So basically इस वजह से आपको one by one बोलने की इजाजत होती है, right? I'm sure some of you will be given time at the end. And okay, somebody said that individual assessment. क्या होता है कि एक पर्सन जब बात करता है ना, फिर उसको बताया जाता है उसकी मिस्टेक्स, मिस्टेक्स उसकी क्या हैं और वो कैसे उनको ठीक कर सकता है. आप देखें, आपकी जो भी डिफरेंट क्लासेस होंगी ना, आप ये सोचें कि हर क्लास में आपको एक डिफरेंट चीज सीखने को मिलेगी, आप और ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर सकेंगे.
राइट? ये चीज आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स लेते हैं ना, इंडिविजुअल असेसमेंट इज एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द एक्सपीरियंस। ओके, सो इंडिविजुअल असेसमेंट के ऊपर आप तभी उसके ऊपर क्वालिफाई करते हैं अगर आप बोलेंगे। अब बोलेंगे तो फिर ही पता चलेगा ना कि आपने क्या मिस्टेक की है, राइट? Yes, it will be no, it's kind of one on one. It will be in the class. Everybody will be hearing to you, but the thing is that आपको मैं assess उसी टाइम पे करूंगी, ठीक है? If you want individual assessment, then you will tell me that okay, ma'am, can you tell me how did I speak, and then I will tell you what was the mistake that you made. Okay? अच्छा, शाइनेस को आप खत्म करने के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा है कि थिंक इन इंग्लिश। आप सोचेंगे ना जब किसी लैंग्वेज को, देन यू वुड कम टू नो अबाउट इट। आपको वो समझ आती जाएगी लैंग्वेज। यू नो, I give this example really because I really like this example. I may be repeating this. When there is a bucket and the tap is on, ठीक है? बकेट कहते हैं जिसमें पानी जा रहा है। A time comes जब वो बकेट फुल हो जाती है ना, तो it starts flowing, उसमें से पानी बाहर निकलता है। ये नहीं हो सकता कि उसमें से पानी बाहर ना निकले। सो बेसिकली जो शाइनेस होती है ना, वो सिर्फ हमारे माइंड के अंदर होती है। जब आपके पास इनफ लैंग्वेज है, जब आपके पास इनफ वर्ड्स हैं बोलने के लिए, तो फिर आप अच्छे से बात कर सकते हैं, फिर आपको कोई भी नहीं रोकेगा, देन यू विल बी एबल टू टॉक। और ये शाइनेस आपके माइंड में जो है कि भी जो हेजिटेशन होती है कि भी आई एम टू हेजिटेट, आई कैन नॉट टॉक, एवरीबॉडी कैन टॉक। आप प्रैक्टिस करें, बोलने से हेजिटेशन खत्म होगी ना। अगर सिर्फ आपके माइंड में ये है कि ओ आई एम टू शाय, आई कैन नॉट टॉक, वी डोंट नो वेदर यू आर शाय और नॉट बिकॉज यू नेवर स्पोक, यू नेवर हैड द अपॉर्चुनिटी टू टॉक, मे बी यू आर बेटर देन अदर्स, ठीक है? तो इसलिए आप बोलेंगे तो उससे ही हमें पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं और आपकी क्या मिस्टेक्स हैं और उनको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? Now I will give you some time to write your questions in the chat, and I will try to answer them. All right. So many of you are saying that how to improve vocabulary, how to improve English, English को बोलें कैसे? So basically, लैंग्वेज की जब भी बात आती है ना, तो लैंग्वेज की बात से मुराद ये होता है कि बोलना, speak. Although speaking is not the only thing that is involved, active listening बहुत ज़्यादा important है। When you listen to a sound, for example, you hear somebody cry, वो किसी भी लैंग्वेज में बात करता होगा, लेकिन जब रोएगा तो usually people cry in the same tone, ठीक है? वो सब रोते एक जैसे हैं, लाफ भी एक जैसे करते हैं। तो दैट मीन्स योर हियरिंग इज राइट, आप उसको सुन सकते हैं। हियरिंग इज कॉल्ड सुनना, ठीक है? HEARING, हियरिंग, इट मीन्स यू कैन हेयर। आपको एक विसल की आवाज आती है, आपको एक ट्रेन की विसल की आवाज आती है, आपको आपको इस तरह की कोई भी चीज आती है ना, तो फिर उसका क्या है कि आप इट मींस यू कैन हेयर, बट द प्रॉब्लम इज हाउ कैन यू लिसन। अब लिसन में ये फर्क होता है कि जब लैंग्वेज है तो आपने सिर्फ सुनना नहीं है। इफ समबडी इज सेइंग हाउ आर यू, यू नो, इट मींस आपने सिर्फ सुना है, रिस्पॉन्ड नहीं किया, इफ यू डोंट टॉक। तो बेसिकली लैंग्वेज में टू वे कम्युनिकेशन होती है। एक पर्सन आपसे कुछ करता है और फिर दूसरा पर्सन जो है वो बोलता है, ठीक है? उससे उससे होता क्या है, यूजुअली कम्युनिकेशन होती है। आप इवन आप कहेंगे कि ओके, इफ समबडी इज गिविंग अ स्पीच, यस मे बी ही इज गिविंग अ स्पीच, बट वो डिलीवर कर रहा है, तो क्या वहां पे बहुत से लोग नहीं है जो उसको सुन रहे हैं? डेफिनेटली। तो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये की है अगर आप स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो। प्लीज अपनी जो फेवरेट एक्टिविटीज है, वॉचिंग मूवीज, रीडिंग बुक्स,
आप जो नेटफ्लिक्स पे कुछ देखते हैं, प्लीज कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू इंग्लिश। आप उसको इंग्लिश में सुने, क्योंकि इंग्लिश आपकी टारगेट लैंग्वेज है। एक होती है आपकी लैंग्वेज, आप बोल रहे हैं, फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, नो मैटर विच लैंग्वेज इज दैट, बट टारगेट लैंग्वेज इज द वन विच यू आर ट्राइंग टू लर्न। जब आप सीखते हैं ना वो लैंग्वेज, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप उसमें मैक्सिमम कम्युनिकेट करें, अपने घर वालों से इंग्लिश में बोलें, आप अपने फ्रेंड्स से इंग्लिश में बात करें। जस्ट टेल देम फॉर 2 weeks आई एम ओनली गोइंग टू टॉक इन इंग्लिश, ओके? इवन इफ दे रिप्लाई यू इन उर्दू, नो नो वरीज अबाउट इट, ओके? आप उससे आप सुन तो सकते हैं ना उर्दू, आप समझ भी रहे हैं, बट you just decide it in your head that I'm going to reply in only English, और जो मैंने मूवीज देखनी है, जो मैंने बुक्स रीड करनी है, जो मैंने सॉन्ग सुनने हैं, मैं इंग्लिश में सुनूंगा। दिस इज वन वे टू अटैच योर एंटरटेनमेंट विद लर्निंग लैंग्वेज। आप कोई भी चीज लर्न करते हैं ना, ठीक है, उसका सबसे अच्छा और सबसे जो एक इंटरेस्टिंग वे होता है वो ये होता है कि आप अपनी फेवरेट हॉबीज, फेवरेट एक्टिविटीज को उस लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर दें। दिस वे आपके पास एक्सपोजर लैंग्वेज का ज्यादा होता है। Let me tell you, if you will keep on listening to one language for 2 3 days, I guarantee you that you will start speaking the same language. क्योंकि ये हो नहीं सकता कि बकेट भर गई है और वो बाहर ना पानी निकले, राइट? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बेबी, उसको जो आप लैंग्वेज सिखाओगे बचपन में, जो वो सुनता है वो बोलता है। इसलिए लिसनिंग पे बहुत ज्यादा मैं फोकस देती हूँ। प्लीज लिसन टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट स्पीकिंग, ओके? No, I would never recommend you exchanging your numbers, because obviously, it's basically a learning platform that you have. Why don't you discuss it here? When I give you opportunity to talk, there are very few students who actually raise their hands. और बहुत से लोग हैं जो कि willing नहीं होते बात करने पे। So basically, I am just a human being. I'm a human being just like you are. मेरे में और आप में कोई difference नहीं है। Apart from that, I can maybe point out to your mistakes, and it is for your own benefit. Otherwise, if you speak to a fellow participant, आप उनके साथ बात करेंगे, maybe you both start speaking in a wrong language and you will end up learning that wrong language. Okay, so this is basically not the way. The main purpose of the class is to learn from this class, to practice it, एंड यस, हमने एक दो दफा ऐसे किया है कि हमने डिस्कस किया है, डिस्कशन हमने रखी है। जो मैंने आपको टॉपिक दिया था, आई टोल्ड यू सम पीपल विल स्पीक इन फेवर एंड सम पीपल विल गो अगेंस्ट द टॉपिक। वो एक टॉपिक था जहाँ पे आपकी डिस्कशन थी, जहाँ पे आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना था, वेयर यू कुड स्पीक टू योर फेलो पार्टिसिपेंट्स, बट इन दैट क्लास ओनली फ्यू स्टूडेंट्स टॉक्ड, ओके? Whoever wants to talk will get an opportunity in a while. Okay, please stop writing on the wall. Okay, somebody said suggest movies or books. Basically, obviously, everybody has a different taste and interest, but I would suggest you watching animated movies. एनिमेटेड मूवीज जो बच्चों के लिए बनती हैं, उनका ये फायदा है कि आप उनसे बहुत अच्छी इंग्लिश लर्न कर सकते हैं। बच्चों के लिए है ना, इसलिए उनमें लैंग्वेज जो है वो इस तरीके से यूज हुई हुई है, जो कि एक बेसिक लैंग्वेज जो सीखने वाला होता है वो भी लर्न कर सकता है। ये एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बुक्स में एवरीबडी हैज ओन इंटरेस्ट, रीड सम गुड बुक्स, ओके? ऐसी बुक्स लें, ऐसी बुक्स ना लें जिनमें आपको डिक्शनरी देखना पड़े, अनलेस यू आर एट एट अ लाइक हाई लेवल। अदरवाइज ऐसी बुक्स पढ़ें जिनमें बेसिक लैंग्वेज की बात हुई हुई हो, ताकि आपको वो अच्छे से समझ आए और उससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो। क्योंकि कोई भी चीज हो उसका एक लेवल होता है, आप ग्रेजुअली ऊपर जाते हैं। All right, here you are, whoever has been talking about speaking English. So here it is, let's speak English because we can. Okay, I'm sure many of you can. And
over here we'll give you an opportunity to talk in English, but make sure you quickly finish it because we have less time. जी स्टूडेंट्स, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आपका माइक ऑन कर देता हूं जो इंग्लिश में बात करना चाहे मैडम के साथ। जी इजाज खान। मैडम प्लीज इनको गाइड कर दीजिएगा। अपना इंट्रोडक्शन की एक्टिविटी रख लेते हैं। ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को और आप इनको प्लीज इनको बता दीजिए कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें इन्होंने फॉलो करनी है। उसके बाद मैं इनके माइक ऑन कर दूंगा। All right, so it will be a quick session, guys. All you have to do is tell your name, which city you belong to, and what is the purpose of speaking English, or what is the purpose of attending this class, why you want to learn English, but make it quick, okay? It's just a basic demo session. You just have to introduce yourself, about your hometown, and why English. गुमनाम, आपका माइक ऑन है। गुमनाम, योर माइक इज ऑन प्लीज। M. Asgar, your mic is on. You hear me? Hello, dear. Can you hear me? Yes, please continue. Hello. We are hearing you. Please continue. Gumnam is here from Gujranwala, and purpose to join the class is that I just want to increase and improve my fluency in English. What should I do? Okay, Kulfam, I hope you got so many tips from this class, and I'm sure if you join our next sessions, that definitely you will learn a lot. Let's quickly move on from one person to another, okay? So when you stop talking, just mute yourself and let the other person talk. Thank you. My name is Muhammad Asghar. I am from Ukada and I joined class to learn English. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Salim Aman. I'm living in Rawalpindi, but basically I'm from Waji Surtsukesar. And I have joined the class because I am soon to be appeared in PMA long course. It is much informative. Thank you to the teacher. Assalamu alaikum. My name is Abdurrauf. I am from Faisalabad. I want to improve my English and go to ISSB, so I joined your class. Assalamu alaikum. My name is Zubair Khan. I am from Balochistan. I want to improve my English speaking, and therefore I join these classes.
and it is very good for every student. Thank you, sir. Assalamualaikum. I am Bakhtawa from Hyderabad. The purpose of joining this class is to improve my English speaking skill because English is the key of success. Assalamualaikum sir, my name is Ali Raza. I belong to Okada city and I want to improve my English language. Assalamu alaikum. I am Abdullah from Faisalabad. I am very thankful to you to give me a chance to speak in English. I hope you will be fine with the best wishes of your health. I want to join Pakistan Army and I applied in PMA 149 long course. I am very thankful to the director of the ISSB Academy, which will arrange our English class. I hope this class will very helpful for us and inshallah we will success in our practical life. Thank you so much. Assalamualaikum. My name is Zabid and I am from Hyderabad. I cleared my SC recently and now I prepared myself for PMA long course 149 and today I am here to speak English, to learn English, especially speaking English. Thank you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Murtaza Abbas. I am from Multan. I am here to learn and improve my English fluency and English spoken English, and not for ISSB but to compete with the world as in the demo class in the early demo class. Ma'am has mentioned that to compete with the world English necessary. So therefore I joined this class. Thank you. All right. So everybody here told us something about themselves. So basically, what I've been telling you from the beginning, that many of you can talk in English. Basically, it's just the fear in back of your head that we can talk, but we cannot talk. But basically, you can. And if you try, you can improve, you can be better, and you can even teach others who did not participate, who should have participated. So basically, this is the platform, this is the opportunity for you to learn the language, to actively participate and know your mistakes and improve them. Okay, so definitely, inshallah, you will learn from this class. This was a free class for you, just to show you, if you enroll in this program, then how you can learn. Okay, obviously we don't have a particular topic in today's class because it was a demo. It was to show you the importance of learning English, why do you need to learn English, and what techniques we use to teach you English language. Okay, I'm sure most of you have got the idea. Even if you haven't, you will definitely get it, because in life you cannot deny the importance of English language. Mind you, I'm talking about language here. Okay, we respect all languages, but this is the need of time. Okay, the need of time means something that you must do, something you have to do, whether you want it or not. But it's always said
एक ऐसा काम जब आप इंटरेस्ट लेके करते हैं, जब आप खुशी से करते हैं, यू लर्न क्विकली एंड यू लर्न इजीली। उस पे आपको ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। ऑन कंट्री, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप सोचते हैं कि इट्स समथिंग दैट इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन मी, मुझे फोर्स किया जा रहा है और मैं ये करना नहीं चाहता लेकिन मैं कर रहा हूँ, वो उस पे आपको टाइम लगता है उसमें, क्योंकि आपकी विलिंगनेस नहीं होती, आपकी विल पावर नहीं होती, आपका इंटरेस्ट नहीं होता। दैट इज व्हेन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, thank you so much, guys. I hope you enjoyed today's session, and I hope we will have more of these. Take care. Allah Hafiz. This was Mrs. Naima Talib in your English class. See you. थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा। उम्मीद है आप सब लोगों ने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझ ली होंगी। जो अनाउंसमेंट है, आप में से बहुत से बच्चे नंबर मांग रहे थे, बहुत सारे बच्चे ग्रुप बनाने के लिए कहते, तो ऑलरेडी ग्रुप हैं हमारे, फ्री ग्रुप्स, मोर देन 100 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, मोर देन 100 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जहाँ से आप लोग इन क्लासेस में आते हैं। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त इनिशियल PMA लॉन्ग कोर्स, GDP पायलट और PN कैडेट्स AFNS की तैयारी कर रहे हैं, लड़कियां और लड़के, उनके ये जो क्लासेस हैं इंग्लिश की, ये फ्री क्लासेस हैं। तो आप उसकी फर्दर डिटेल मुझसे, जो शख्स नंबर मांग रहा था उसके लिए एक ही नंबर है 0300 888 5825। नेक्स्ट सेशन 9 PM, कहूट कंपटीशन, बेसिक इंग्लिश, बेसिक मैथ विद कैश प्राइजेस। तो आपसे मुलाकात होती है एग्जैक्ट 9 बजे। सेम ID, सेम पासवर्ड, क्या पासवर्ड है, 3 ID है 3137861947, पासवर्ड इज 313786। 30 क्वेश्चन होंगे, 15 मैथ के, 15 इंग्लिश के, वही सवाल जो आपके इनिशियल टेस्ट में आते हैं। आप लोगों से मुलाकात होती है 9 बजे के कहूट में। इस क्लास रिलेटेड जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।